So very good evening to all of you. And it is a very important occasion considering the fact it is an board exam schedule. And all the curiosity seekers for the important questions, visitors, प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा के इस महत्वपूर्ण दौर में आप सब परीक्षा में जुट जाएं और महत्वपूर्ण प्रश्न संकलन हेतु आ जाएं। Today we shall discuss about the long answer type questions based on prose section. आज हम खंड प्रोज में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर विशेष चर्चा करेंगे. And the first question is from the lesson number first, the last lesson. The question is describe the scene of the last day classroom. The answer is that it was the last day for M. Hamel, as the order from Berlin that only German language will be taught in the school of Alsace and Lorraine. So that's why M. Hamel declared it the last lesson for him. And during the day of the last lesson, everything was as quiet as Sunday morning. M. Hamel was beautifully dressed in green coat, fried shirt, and a white black silk cap, which he wore only on Sunday or prize days. When the French reached, each and everything was peaceful. Everybody was on their seat. But the most surprising thing for the French was that the old people of the village were sitting. And Yam Hammer did not scold him for getting late. And on that day, everybody was in silence. Yam Hammer, the important lesson of the French language. He glorified that French is the most beautiful, logical language in the world. And as a mother language, he explained them that it is the important for all of them. When a people are enslaved in a country, it is like a key to prison because the language is the only way to communicate with them. And on that day, there the people were sitting at the back benches to thank M. Hamel for his 40 years faithful service as a language teacher. But finally, the church bell struck and M. Hamel declared that the class was over. He was also very sad to leave his class as it was the last one for him. So now this was the long answer type question from the first lesson, though the name of the lesson is the last lesson. हिंदी में देखा जाए तो अंतिम पाठ वाले दिन का दृश्य कैसा था. यम हेमल अपने हरे कोट में और चमकीले शर्ट में और एक चौड़ी जो है एक गोल सी टोपी जो थी रेशमी उसको पहने हुए थे जिसको वो स्वयं रविवार के दिन और पुरस्कार वितरण के दिन पहनते थे. उस दिन यम हेमल थोड़ा देर से पहुंचा और जब देखा तो सारे विद्यार्थी कक्षा में पहले से बैठे हुए थे. यम हेमल ने उन्हें कोई डांट
नहीं लगाई। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ क्या थी कि सीट की अंतिम पंक्ति पर या पीछे वाली पंक्ति पर गाँव के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे और वो जो है वहाँ पर शांत भाव से बैठे हुए थे। उस दिन एम हेमल ने लोगों को मातृभाषा का पाठ पढ़ाया, ये कहते हुए कि जो फ्रांस की भाषा है सबसे सुंदर है, तार्किक है, जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। उन्होंने मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डाला और उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो है जेल से बाहर आने की कुंजी है उन देशवासियों के लिए जहाँ पर वे किसी कारणवश गुलाम हो जाते हैं। आखिरकार जो है चर्च की घंटी बजी 12 बजे। एम हैमिल ने इशारा कर दिया कि क्लास खत्म है। कोई भी वो दुखी थे क्योंकि ये उनका अंतिम क्लास था। अब हम दूसरे पार्ट में अगर जाते हैं जिसका नाम है द लास्ट स्प्रिंग, तो वहां से भी दो प्रमुख क्वेश्चंस बन करके आते हैं। व्हाट इज रैग पिकिंग फॉर द पीपल, और अगला जो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रैग पिकर इन सीमापुरी। सीमापुरी में जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं उनकी क्या स्थिति थी। तो आंसर में देखते हैं कि देयर वेयर रैग पिकर्स इन सीमापुरी एंड among them the adult and children. Children considered it wrapped in wonder and as a gold. For them it is like gold, while the adult one considered it the only way to earn their living. Because in Simapuri there was nothing but only the rag picking to collect the money. The condition of the rag pickers is very miserable in Simapuri because they lived in grass, cloth, and tin made houses. It was very difficult for him to afford even a full time meals. They were in rag clothes. Children were without barefoot and struggled hard to get a full time meal. Somehow they had their names in voter list enable them to gain through the ration card. And even after a day's labor, he find hard to get full-time meal. Such was the miserable condition for them. They always in search of food and clothing, which was a very difficult one. Such was the condition of the poor rag pickers in Simapuri who settled in the street of Simapuri near in the town. Now we move to the most important question from the section 2 where there was the workers who were in glass industry. And the question is that mention the hazards for the workers in the bangle industry. As we know, Firozabad is famous for the bangle making and the glass building industry. In this factory, there were the workers. Among them, there were children and the adult. इस फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग थे वो वयस्क भी थे और बच्चे थे। The children has to work in the dim light at high temperature and in a dingy cell without proper air and light. It was a suffocating atmosphere where the adult had also to work, and in such a suffocated atmosphere without proper air in a dirty places, it was the risk of lungs and respiratory disease because of the suffocating atmosphere. Apart from it, they lived in a dirty chamber which was not a very clean one. It was entirely the danger of polluting the environment as well as the risky diseases. And as far as the children are concerned, they polished the glass, and during this, they always lose their eyesight before they
grow adult. It was the pathetic and miserable condition of the workers in the factory. There was a polluted atmosphere which always uh, affected not only his health but also the mentality of the particular workers. For the centuries, it was the generations who spent their life in the factory and still their young ones and the children holding like this. It was a critical condition or miserable condition for the workers in such a hazardous condition in the glass industry. So these are the two important questions based from lesson number one and lesson number two. You must prepare it for this. अब थोड़ा सा हिंदी में इसकी चर्चा कर लेते हैं। कांच की फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर थे, उनके लिए कौन से जोखिम भरे खतरे हुआ करते थे। कांच की फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते थे, उन्हें गंदे और शुद्ध वातावरण से दूर एक घुटन भरे वातावरण में काम करना पड़ता था, जहाँ पर छोटा सा कमरा होता था, अंधेरा होता था और पूरी तरीके से उन्हें एक घुटन भरे माहौल में काम करना पड़ता था। उनमें से अधिकतर लोगों को उस अत्यधिक ताप पर काम करना पड़ता था, जहाँ पर वे पसीने से तरबतर हो जाते थे। एक तरफ घुटन भरा माहौल, शुद्ध वायु का न होना, इससे खतरा था उनको फेफड़े और श्वास संबंधी अनेकों बीमारियों के होने का। और इसके कारण जो है, वे अस्वस्थ तो रहते ही थे, मानसिक रूप से भी पूरी तरीके से कुंठित रहते थे। उन्हीं में कुछ बच्चे भी थे, जो बाल श्रम के अनुसार मज़दूरी करते थे अपने जीवन यापन को पाने के लिए। वे इतनी कम उम्र में इस घुटन भरे वातावरण में कार्य करते थे। चूड़ियों की पालिश करते हुए, काँच की पालिश करते हुए जो उसकी धूल होती थी, उस धूल की वजह से उनकी आँखों की रोशनी बड़ी उम्र तक आते-आते खो जाती थी। यही उनका दुःख दर्द था, यही उनकी दयनीय स्थिति थी। आज भी वह एक ऐसे दूषित वातावरण में, एक ऐसे मलिन बस्तियों में रहते थे, जहाँ पर स्वच्छता का कोई नाम-निशान नहीं था। वे आदिमानव की संस्कृति में जानवरों के साथ एक कमरे में रहते थे, जिसके दरवाजे भी सही नहीं थे। ऐसी स्थितियों में स्वास्थ्य संबंधी चिंता तो उनके पास थी ही, साथ ही घर में जो है पैसों का ना होना और यहाँ तक कि भोजन का भी समुचित प्रबंध करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। ये थी इनकी जो है वास्तविक स्थिति और इस खतरे में काम करने की स्थिति। इन दोनों जो है विस्तृत उत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आप पूरी तरीके से पूरा करिएगा और उसका लाभ उठाइएगा। फिर आगे की चर्चा में फिर और समय अनुसार हम फिर से जो है वापस आपको मिलेंगे। टाइम आपका 8 से साढ़े 8 के मध्य रहेगा और कोशिश की जाएगी कि वहाँ तक पहुँचा जाए। देखने के लिए धन्यवाद। जो नए लोग हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए उपयोगी वीडियो समय-समय पर लाते रहेंगे और लाइव भी आने की पूरी कोशिश करेंगे। चालू हो गए हम मेल किए थे। तो क्या आंसर दो इसका कि नाम ले लो। हाँ अनुराग बोलो बोल दो। अनुराग हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। आप कहाँ से हो? हेलो सर बोला इसका आंसर दिया। क्या है नाम ले लो अनुराग। इसमें अनुराग नाम का एक बहुत-बहुत
कहाँ गया वीडियो? मेरा फिश ना था इसकी